36 संस्थान इस नेटवर्क में शामिल हुए हैं। एनडीआरएफ द्वारा स्कूलों में सुरक्षा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। क्षेत्रीय संगठनों जैसे एससीओ, बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाड़ी पहल, बिम्स्टेक और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के तहत आपदा प्रबंधन पर क्षेत्रीय सहयोग बढ़ा है। एसडीआरएफ के आवंटन में बहुत यह महत्वपूर्ण विषय है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में वित्तीय सहायता प्रबंधन बहुत आवश्यक होता है महोदय। एसडीआरएफ के आवंटन में 109 गुना से ज्यादा वृद्धि की गई। 2021 में नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकारों को 2015-20 की तुलना में वर्ष 2021-26 में लगभग 3 गुनी राशि दी गई है। और अगर इसको थोड़ा सा देखा जाए तुलनात्मक, तो 2004 से 14 के बीच मात्र एसडीआरएफ में 38,000 करोड़ का प्रावधान था, बजट था, जो 2014 से 2024 में 3 गुना बढ़कर 1,24,000 करोड़ रुपए हो गए हैं। एनडीआरएफ में भी महोदय 2004 से 14 के बीच 28,000 करोड़ बजट था, जो 2014 से 2024 में 3 गुना बढ़कर 79,000 करोड़ रुपए हो गए हैं। इस प्रकार अगर इस बजट को देखा जाए तो इन 10 वर्षों में 3 गुना की वृद्धि हुई है। महोदय, मैं जरूर आग्रह करना चाहूँगा कि चूँकि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प है और यह विधेयक आज के समय की जरूरत है, जिसमें सभी मॉडर्न डायनामिक्स परिभाषित किए गए हैं। और इस विधेयक को पारित होने के साथ ही जो भी प्रभावित लोग हैं आपदा के कुशल प्रबंधन से निश्चित रूप से उस क्षेत्र में इतनी कामयाबी हासिल होगी कि हम नुकसान को भी कम कर पाएंगे, जान माल के नुकसान को भी हम कर पाएंगे। तो इसलिए यह विधेयक को लाना जरूरी था। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपदाओं से प्रभावित उन लोगों के दर्द को अपना दर्द समझा है और माननीय गृह मंत्री जी यह विधेयक लेकर आए हैं। हम सदन से आग्रह करेंगे कि इस विधेयक को सर्वसम्मत पारित किया जाए। महोदय, धन्यवाद। Honorable members, it's an important amendment bill regarding Apada Prabandhan, disaster management. So I request all the members to be present here and give their important views. So I request Shashi Tharoor ji to initiate the process. Thank you very much, Mr. Chairman. I rise today in opposition to the Disaster Management Amendment Bill 2024 moved by the Honourable Minister, because it is a disaster. So I'd like to elucidate our perspective on the legislation we had great expectations of, but which appears to have been taken out of the oven half-baked and rushed into this hallowed chamber, clamouring to be passed. That this bill is even being debated in Parliament is miraculous, because as several of my colleagues in the opposition pointed out in the first week of August, 1st of August 24, when the Honourable Minister of State introduced this bill, this legislation was brought under entry 23 of the concurrent list of the Constitution. Now, Mr. Speaker, you don't have to be a constitutional expert to realise that social security and social insurance, employment and unemployment, which is the subject of entry 23, does not even remotely cover disaster management. It's another matter that had the government actually tried legislating on the issue of unemployment, unemployment in India might not be in such disastrous shape. But chalo, par chalenge koi nahi, we will carry on, sir. But anyway, here we are with a speaker, with a bill hurried into Parliament on a constitutionally untenable, federally unviable ground, and with a host of other drawbacks that diminish even the little imagination and innovation that the centre has sought to display. Now, before the Treasury benches accuse the opposition of opposing just for the sake of it, let me reassure them that I find myself in agreement with the rationale for this bill that the Minister has just explained. So, in my first parliamentary term, I was the convener of the Parliamentary Forum on Disaster Management, which has since been abolished by the NDA government.
Yes, the Disaster Management Act of 2005 was in need of rigorous reform. And yes, there is a pressing need to streamline our sprawling and scattered disaster management framework, which, despite the best of intentions, ends up causing inordinate delays in the worst moments, failing to rescue our fellow Indians caught up in disasters. Now, we see, and he's right to say, human lives, infrastructure, Mother Nature, all of these things are affected by disasters. But we need, sir, we as MPs from Kerala understand this very well. Yet far from strengthening and making effective our crisis management mechanisms, and far from bringing, as the Minister has just promised, more clarity and convergence to our prevailing disaster management instruments and institutions, it actually exacerbates the problem, saddling us with an ill-thought-out, overlapping and convoluted distribution of powers amongst the authorities and committees it envisages or retains from the current Act. The net result is a greater centralization of the Disaster Management Act 2005 and a top-down approach that will create a chain of command so complicated and heavy that it may collapse under its own weight before even mitigating, much less preventing, any horrific disaster like the landslides in Wayanad, which were the most devastating landslides in Kerala's history. On the 3rd of August, Mr. Chairman, the day after my honourable colleague from Wayanad, I made an emotionally searing visit to Wayanad and assisted in the distribution of relief supplies gathered by the MP office in my constituency of Thiruvananthapuram. Picking my way through the rubble to view the destruction of Mundakai, Churalmala and Puncherimattam, I beheld massive JCBs rumbling, where till 5 days previously, lavishly green, hilly villages had sprawled beneath great blue skies. At a hospital suffused with the anguish of countless Indians, whose homes and dreams were pulverized by bombardment of rocks and boulders in the early hours of 30th July, I met a young survivor who had endured inconceivable horrors. Just 8 years old, sir. She had lost her father, mother, brother, sister, grandfather and grandmother, and sustained numerous injuries from broken bones to a heavily bruised face. As I saw her propped up in bed, immersed in a colouring book, a desolation gripped me, sir. We should have been able to predict better what was to come, prepare for it, and even to prevent it. But we failed at all of these. The wails of Wayanad and the scenes of devastation and despair that greeted me there and my colleagues who have been there, and in the relief camps, will forever haunt me. All of us together owed it to the more than 480 people who perished in Wayanad and an equally staggering number who were grievously injured to ensure that no Indian citizen in any part of our country ever again has to endure such a gruesome fate. But this bill, I'm afraid, does not guarantee that. Right off the bat, this bill promises, as I mentioned, greater clarity and convergence in the roles of authorities and committees working in the field of disaster management. But in reality, it confuses and complicates and typically just concentrates power in the hands of the central government. This is evident when the bill accords statutory status to the National Crisis Management Committee and the High Level Committee, both of which predate this bill, but without explaining why. Pursuant to Clause 6, the Cabinet Secretary will chair the National Crisis Management Committee, with the central government deciding everything: who will be part of it, who will be invited to participate in its meetings, what powers it will exercise, the functions it will perform, and even what procedures it will follow in exercise of the power and discharge of its functions. In other words, though on paper it will be the nodal body to deal with major disasters, in reality it will be a creature of the central government, a timid creature. Nowhere does the government stipulate that such a crucial body should necessarily have ecologists, environmentalists, experts of various kinds who can help us predict, prevent, prepare for and mitigate natural disasters. This disdain for expertise, Mr. Speaker, is a recurring theme of this bill. Now, given that we already have a National Executive Committee which is empowered to act as the coordinating body, a National Disaster Response Force for targeted responses, and the overarching National Disaster Management Authority, what is the utility of this committee? Will it not just serve to convolute the chain of command, to delay response time in situations where tardiness can result in the loss of tens of thousands of lives? Further complicating the chain of command and vesting yet more powers in the central government is this:
Pursuant to Section 8B of this revised Act, the Centre is to constitute a high-level committee with the Union Minister as chairperson for approving financial assistance under Sections 46 and 47, the National Disaster Response Fund and the Mitigation Fund. Now, ultimately, both these funds shall be applied in coordinates with the guidelines laid down by the central government in consultation with the NDMA. So there's no autonomy to this high-level committee. So once again, the question arises, what exactly shall be the powers of the statutory body? This bill, Mr. Chairman, institutionalizes inadequacies and inefficiencies, especially at the central government level. Whereas pre-existing bodies with functions not clearly demarcated, overlapping with those of other institutions, have been given statutory recognition, the National Disaster Management Authority, the national linchpin of this Act, remains enslaved to the Ministry of Home Affairs and has no administrative or financial powers of its own, having to root even its minutest decisions through the Home Ministry. A needlessly arduous and time-consuming process. It's also been reported in the media that the NDMA is massively understaffed. I was hoping the Minister would address that in his reply, at least if he's not done so in his introduction. The buck has to stop somewhere, Mr. Chair. And for better coordination of disaster management and mitigation efforts, the NDMA should have been it. They should have been upgraded to a department of the Government of India, even if not to a ministry, but it remains subordinate to the Home Ministry. Even the question of its leadership has not been satisfactorily addressed. It's officially chaired by the Prime Minister. It's normally overseen by Vice Chairperson, who has the rank of a Cabinet Minister. But bafflingly, Clause 3 of this bill says any member of the NDMA is authorized to perform the day-to-day functions of the authority, forgetting that the political heft of a ministerial rank is vital for dealing with states and other ministries and departments of the Union. So, Mr. Speaker, Mr. Chairman, this bill, in its ostensible pursuit to decentralize the decision-making process regarding funds, manages to do something utterly bizarre. It dilutes the entire purpose of a National Disaster Response Fund by removing the specific uses for which the fund was intended. One of the most pressing criticisms of the old Act was the excessive centralization of fund allocation. Many of our states have complained about this, especially when disasters are categorized as severe. The debilitating human cost of such a disaster demands from the centre a sense of urgency, completely absent in the proposed framework. That the centre is bereft of the sense of urgency, let alone of any compassion. It has proved very often, especially when disaster relief funds from the NDRF were casually denied to Tamil Nadu and only disbursed to Karnataka after an inordinate delay. In 2023, when Tamil Nadu and Karnataka found themselves on the brink of catastrophe, they were compelled to move the Supreme Court to access the much-needed NDRF fund. Funds they had a claim to. In Karnataka, and yes, Himachal has been mentioned, others I'm sure will do so. Let me speak of the cases I know. In Karnataka, 196 out of 236 taluks had been officially designated as severely drought-affected by the interministerial central team, and the subcommittee of the National Executive Committee recommended financial aid for the state, but despite this, the state, Congress ruled, I admit, had to wait over 6 months to receive the funds, long after the prescribed 1-month period following the IMCT report. This deplorable delay deprived the state of essential resources to protect its citizens and frankly violated their fundamental right to life of the people of Karnataka. Tamil Nadu suffered a similar fate as well, especially in the aftermath of Cyclone Michaung, when there was a complete dearth of necessary funds and the central government was indifferent. Now, while we in Kerala had long been demanding that the Wayanad landslide be declared a national disaster, this request was dismissed in a letter to me by the MOS Home on 10th November, claiming there were sufficient funds in the State Disaster Relief Fund. The justification provided was that existing guidelines under SDRF and NDRF offer no provisions for such a declaration. The lack of financial aid from the NDRF, under the perversely misguided assumption that the SDRF would suffice, has left us in an unenviable position, sir. With no interim aid forthcoming, Kerala has been left with no option but to insist on the declaration of the landslide as a level 3 disaster, which will at least allow for the mobilization of some resources and support. But many of us had raised this much earlier. No sooner had the landslides ravaged Wayanad
I wrote to the Honourable Home Minister on the 31st of July, requesting him to recognise this monumental cataclysm as a calamity of severe nature in terms of paragraph 8.1 of the MP Lads guidelines. So we could have all helped at that time. We could have recommended works up to 1 crore, I beg your pardon, from MP Lads funds. But the request was ignored. The Minister of State wrote to me in early November to tell me that the Inter-Ministerial Central Team, IMCT, had visited Wayanad from the 8th to 10th of August, and the central government would take action based on its request. August, sir! They're supposed to take action within 1 month according to the existing Act. To this date, no action has been taken, and no additional funds have been arranged for Wayanad, sir. How can we accept this? Now, this bill, Mr. Chairman, is an excellent case of minimum decentralization, maximum declamation, at which, of course, this government excels. Indeed, even one of the bill's better provisions is undermined by the government's refusal to walk the talk. I refer to the creation of separate urban disaster management authorities in state capitals and cities with municipal corporations, except Delhi and Chandigarh. This has been introduced to foster greater coordination than what is possible under the disaster management authorities in our big urban centres. But even while it takes a step which otherwise I would have applauded, the centre fails to provide for any necessary financial devolution, without which this measure will be toothless, sir. While the government appears to have recognised that district administrations across India should tackle emerging threats on their own terms and in line with local conditions, it has overlooked the dismal fact that in our country the total municipal expenditure accounts for barely 0.79% of GDP. Paise kahan hai? Given that this bill focuses on disaster risk reduction rather than post-disaster management, it's crucial that the government realize that urban local bodies need to be financially empowered, as in other countries, to amass resources to institute, equip and run urban disaster management authorities and discharge their risk reduction obligations to the letter. For risk reduction activities to be conducted at the local level, the creation of infrastructure that bolsters the vitality and vigor of urban local bodies is vital. But this bill is silent on the issue, offering no real resources to revitalize India's urban local bodies. Now, this creation of these bodies could have been a good step towards sustainable urban spaces, but it will be useless without effective devolution of finances and authority, Mr. Minister. This needs to be amended, this half-baked provision. Another damaging aspect of this bill: it seeks to weaken the National Executive Committee and the State Executive Committees, staffed to the level of secretaries to the governments of India and the states, which are supposed to formulate national level and state level disaster management plans. If this bill passes, the NDMA and the SDMAs will instead assume this power. At the same time, these committees will remain the coordinating bodies for relief, rehabilitation and reconstruction during and after natural disasters, saddling them in effect with the responsibility for exercising disaster management plans that they did not formulate. So you've got to execute something that you did not actually come up with. This flies in the complete logic of the original purpose of these committees, which was to foster greater collaboration amongst various ministries, sir, of the union and state governments. Federalism, cooperative federalism. Where is the cooperative federalism here? So the bill's major weakness has throughout been its inability to innovate on institutional mechanisms to deal with disaster risk. Although it achieves coordination for greater risk management, it offers no clarity on how to achieve such coordination in practice amongst a wide range of institutions, split both vertically and horizontally, and including non-government, private and civil society elements. By the way, Mr. Chairman, and the Minister has not noted this, disaster relief, rehabilitation and reconstruction is still not a justiciable right in India. The Indian state has for far too long undertaken relief measures as an obligation, not a duty. It must discharge that duty in fulfillment of its citizens' inviolable rights. This has been an issue for years, but the bill would have been an opportunity to fix it, because we are learning lessons from what hasn't worked in the earlier version. You've instead squandered it, Mr. Minister. You will, of course, carry out relief assistance
up to your whims, your political expediencies. You may provide ex gratia compensation, you may provide relief items, compensation for destruction of houses, etc., destruction of boats, fishing equipment, farming equipment, etc. But all of this will vary from place to place, and it must change. Disaster relief must be a fundamental right of all Indian citizens. It's also important, so one important negative factor of this bill that testifies to its lack of imagination, creativity, and reluctance to accept the bleak realities of our environment. On 25th of July, the Honourable Minister of State for Science and Technology and Earth Sciences told this House, sir, that the government has no plans to classify coastal erosion or heat waves as notified disasters under the Disaster Management Act 2005. Now, this, sir, is crazy. We need to expand the list of notified disasters given our own experience since the Act was passed in 2005. To this day, the disasters eligible for assistance under the NDRF remain limited to cyclones, floods, droughts, earthquakes, landslides, and so on. Coastal erosion and heat waves are narrow, outdated definition of disaster stands in contrast to the growing global consensus that recognizes coastal erosion and heat waves as climate-related disasters. The devastating impacts of these calamities on ecosystems, on human health, are no longer matters of debate, sir. My own constituency has lost 65 square kilometers to coastal erosion since I became the MP. I've said in this House and in a letter to the Prime Minister, if we had lost 1 inch to the Chinese, we would have made it a national issue. We have lost 65 kilometers to natural disasters. We don't seem to care. I'm sorry, sir. According to the All India Meteorological Department, 2024 has witnessed already a staggering 536 heat wave days, the highest in nearly 14 years, and between 2013 and 2022, heat waves and sunstrokes claimed more than 10,000 lives. And yet, the government obstinately refuses to acknowledge this disaster looming over us. The Disaster Management Act was passed over 19 years ago. It might not have anticipated that climate change would get so bad and that coastal erosion and heat waves would transmogrify into such a formidable challenge in the future. But why not this bill? If this bill has learned any lessons in the last 19 years, they should show them here. Why could it not devise a mechanism to grapple with this burgeoning crisis? Though the Disaster Management Act's definition of a disaster is actually broad enough to encompass climate-induced events, its statutory list remains static and unimaginative. It obstinately ignores the realities that our citizens are enduring, sir. This is a dangerous oversight, as the impacts of such events, widespread loss of life, destruction of livelihoods, are no less severe than the devastation wrought by floods or earthquakes. In failing to adapt, we risk exposure to avoidable calamities. The government demonstrates its indifference to the plight of those numerous Indians who perished because of heat stroke or lost their homes and livelihoods to coastal erosion. Therefore, the NDMA needs to enhance its capacity to prevent climate change from becoming disasters, such as unprecedented landslides in Wayanad's case, heat waves and storms. Let's not forget, sir, that amongst the primary contributors to the Wayanad calamity were a host of issues, not just excessive rainfall, as the Home Minister mentioned. These were widespread deforestation, with 62% of Wayanad's forests having disappeared since 1950, ceaseless soil erosion made more relentless by rainwater seeping into loose topsoil, which reduces soil cohesion and contributes to landslides, and soil piping, the formation of underground tunnels because of subsurface soil erosion. I won't go on, sir, but the fact I want to say very simply is that climate change is worsening the situation, especially with more flash floods and landslips being triggered by merciless, ruthless monsoons. With the warming of the Arabian Sea creating deep cloud systems which result in brief spells of ruthlessly intense rainfall, Kerala will be yet more vulnerable to landslides. We must take stock of these facts, uncomfortable though they may be, and seek to confront them head on, Mr. Chair. Sir. Thank you. Sir, I will wrap up. I just need 2 minutes for one last point, sir. We wanted this bill. We wanted it to be imaginative and innovative.
But we have seen none of that. We have not seen financial administrative preparedness. Instead, it is just a testament of the government's insistence to rush it through Parliament. But let me ask the Honourable Minister in all earnestness, what good will bulldozing this bill through Parliament do if it cannot prevent another Wayanad? Where are the provisions for disaster prevention, like landslide mapping, coastal protection measures? It will not do India and Indians any good merely to create a framework that does not actually devolve any powers upon the states, upon local urban bodies, upon self-government units in our country. Thank you, Shashi What is needed, sir? 1 minute. Stricter streamlining of a scattered policy framework. There is far too many authorities and bureaucratic muddles. An end to the concentration of powers in the centre's hands. A genuine attempt to learn from our failures at navigating past disasters and keep up with the challenging realities of climate change. A revised bill should allow for expertise, independent of committees, streamline and clarify the role of the Shashi Tharoor ji. body. Next speaker, Sri Trivendra Singh Rawat ji. Given, Please conclude. It should also give MPs a right to be heard. 1 second. I'm just finishing. It should make disaster relief a legal right, revive the parliamentary forum on disaster management to give the MPs' views a chance to be heard. And this bill does not have any of these qualities. Therefore, it must be returned to the drawing board, and I urge the minister to withdraw the bill. Thank you very much, Sanjay. Sri Trivendra Singh Rawat ji. Next speaker. धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 और उत्तराखंड में बार बार आने वाली जो आपदाएं हैं उसके संदर्भ में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जो ये संशोधन विधेयक आया है उसमें शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ये शहरी क्षेत्रों के लिए और राज्य की राजधानियों में UDMA स्थापित करने का प्रस्ताव करता है। मैं समझता हूं कि ये एक नई अवधारणा है और निश्चित रूप से ये बहुत कारगर साबित होगा। जो आपदा प्रभावित हैं या आपदा से पहले जो आवश्यक जो प्रबंध करने होते हैं वो काम करने में ये सफल होगा। जो राष्ट्रीय और राज्य आपदा डेटाबेस है इसमें इसका प्राविधान किया गया है जो बेहतर जोखिम आकलन और संसाधन आवंटन में मदद करेगा। तीसरा जो विषय है राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF का गठन राज्य सरकारों को स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित आपदा प्रतिक्रिया कर्मियों को तैनात करने की अनुमति देगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य की जो परिस्थितियां हैं वो स्थानीय जो प्रशासन है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। निश्चित रूप से इसको राज्य को इसका तैनाती का अनुमति देने से इससे तमाम जो देश के राज्य हैं पूरे देश को इसका लाभ होगा और विशेष रूप से जो पर्वतीय क्षेत्र हैं चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो या पूर्वोत्तर के राज्य हों, वहाँ पर आपदा प्रभावित स्थान अक्सर बहुत दुर्गम होते हैं और जब इस तरह की परिस्थितियाँ होती हैं तो कई बार वहाँ का जो नेटवर्क है वो भी प्रभावित होता है। सड़कें टूट फूट जाती हैं और उन पर आना जाना मुश्किल हो जाता है। वहाँ पर हवाई सेवाएं भी उस समय बाधित हो जाती हैं। ऐसे में मैं समझता हूँ कि जोखिमों का जो आकलन है और संसाधन आवंटन करने में ये आपदा डेटाबेस के आधार पर निश्चित रूप से प्रतिक्रिया बल जो हैं उनको मदद मिलेगी। जो शहरी योजना का प्रावधान किया गया है ये शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थानीय स्तर पर योजनाओं को तैयार करेगा और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। जो व्यवस्थाएं हैं उनको विकेंद्रित करने इसमें किया गया है
मैं समझता हूं कि विकेंद्रित करने से अधिकतम जो सामाजिक संगठन है, जो हमारा प्रतिक्रिया बल है, उसको इसमें इन्वॉल्व करके और जो जिम्मेदारियां दी जाएंगी और उससे जो स्थानीय आवश्यकताएं जो ज़रूरत होती है स्थानीय आधार पर, वो ध्यान में रख करके ही और योजना आगे बनाई जाएगी। उससे जो प्रभावित जो लोग हैं उनको उससे मदद मिलेगी। जलवायु परिवर्तन और जोखिमों का आकलन। विधेयक जलवायु परिवर्तन से जुड़े खतरों का नियमित मूल्यांकन करने पर जोर देता है, जिससे जलवायु प्रेरित आपदाओं जैसे ग्लेशियर, लेक्स का फटना, फ्लड्स और अनियमित मौसम पैटर्न के लिए बेहतर तैयारी की जा सकेगी। ये आज जिस तरह की परिस्थितियां निर्माण हो रही हैं और कहीं ना कहीं आज देश और दुनिया ये महसूस कर रही है कि इकोसिस्टम उसमें कुछ परिवर्तन आ रहा है, मौसम में भारी बदलाव देखने को आ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में ये जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं उससे समय पूर्व आकलन करने में सुविधा होगी। जो प्रारंभिक चेतावनी और निगरानी और इसमें एआई का इस्तेमाल करने की जो बात है, उससे जो दुर्गम क्षेत्र हैं जहां पर अकस्मात आपदाएं आती हैं और उनका कई बार पता भी नहीं चल पाता जब, और उससे बचने की स्थिति बहुत कठिनाई होती थी, उसमें एआई का इस्तेमाल करके और जो चेतावनी प्रणाली जो विकसित की जा रही है उससे समय पूर्व जब चेतावनी दी जाएगी तो उससे जान माल का जो खतरा है वो बच सकेगा। पुनर्वास के बजाय पुनर्प्राप्ति सहायता ये एक महत्वपूर्ण सुधार है और इससे आपदा जो पीड़ित हैं उनकी सहायता के लिए एक बहुत ही सकारात्मक सुधार ये किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि जो आपदा है इसके कारण जो हमारे नौनिहाल हैं, महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, शिक्षण संस्थाओं में हैं, वो बहुत बुरी तरह उनका जीवन प्रभावित होता है, विशेषकर नौनिहालों का जीवन, क्योंकि आपदा के समय विस्थापन ये अनिवार्य हो जाता है और विस्थापन जहाँ पर हम करते हैं वहाँ पर उनकी जो शिक्षा है, उनका जो स्वास्थ्य है, उनकी जो देखभाल है वो प्रभावित होती है और उसके कारण यूनिसेफ पे अगर हम आंकड़े पढ़ेंगे तो वो बहुत चौंकाने वाले हैं। पिछले 10 सालों में लगभग 3,70,00,000 बच्चे इससे प्रभावित हुए हैं। उनका जो मानसिक विकास है वो प्रभावित हुआ है, उनका शारीरिक विकास ये प्रभावित हुआ है और उनकी जो परिवार का जो आर्थिक ढांचा है वो आर्थिक स्वरूप भी उनका पूरी तरह प्रभावित हुआ है। ऐसे में जो प्राविधान इस एक्ट में किए गए हैं, जो सुधार इसमें किए गए हैं, मैं समझता हूं कि उससे निश्चित रूप से इन नौनिहालों को, और हम ये कहें कि देश के जो भविष्य है, जो भावी भारत है, वो भारत उससे सुदृढ़ होगा और वो देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ये आने वाले समय में वो बच्चे निभा सकेंगे। इसी तरह से जब आपदाएं आती हैं तो जो हमारे वन्य जीव हैं, जो वन संपदा है और बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। जो वन संपदा है, वन्य जीव हैं, वो इससे बहुत डिस्टरबेंस होता है और उसमें भी इसके कारण कुछ सुधार आएगा। मैं अध्यक्ष जी सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, एक उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं 2 मंडल हैं, उनका जो सीमांत क्षेत्र है वहाँ पर क्वारी गांव है ये, और क्वारी गांव धसाव पर है। उसके कारण 2 साल तक जो पिंडारी ग्लेशियर से जो नदी निकलती है, पिंडर नदी,
2 साल तक पानी में मिट्टी बहकर आता रहा। वहाँ का जो जलीय जीव है वो प्रभावित हुआ है, उसके कारण उसका जीवन संकट पर आया है। ये आपदा केवल एक क्षणिक नहीं होती, बल्कि उत्तराखंड जैसे राज्य जहाँ पर जो नाप भूमि है उसके अलावा पूरी भूमि ये वन भूमि है, और वन भूमि होने के कारण जब उनके विस्थापन की जरूरत होती है, उनको विस्थापित किया जाता है, तो उनको विस्थापित करने में भूमि का भारी अभाव होता है। और उसके कारण कई बार हमारे उनको स्कूलों में हम उनको ठहराते हैं, पंचायत भवनों में उनको ठहराते हैं, उसके कारण हमारी जो शिक्षा है वो भी प्रभावित होती है, क्योंकि पहाड़ों में ढालदार खेत हैं और ऐसे में वहाँ पर उनको रोकने के लिए टेम्परेरी व्यवस्था करने में भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है और लोगों में एक तरह का एक भय का वातावरण बना रहता है, क्योंकि कोई भी जो प्रभावित हैं वो अपने, चाहे उनका क्षेत्र कितना ही प्रभावित हुआ हो, वो अपने गांव को नहीं छोड़ना चाहता है, वो अपने गांव में ही रहना चाहता है, क्योंकि उसकी जो आजीविका का सोर्स है वो जो खेती है वो बाहर उसको खेत नहीं मिल सकते, न उनके लिए उपलब्धता होती है। ऐसे में एक जो इसमें जो प्रणाली जो इस अमेंडमेंट में जो किया गया है, जो एआई का जो सहारा लिया गया है, मैं समझता हूँ कि उसके कारण तमाम तरह की सुविधाएं इसमें होंगी। उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर बरसात के दिनों में भारी भूस्खलन होता है और लैंड इरोजन होता है। वहाँ की जो उपजाऊ भूमि है, वो उपजाऊ मिट्टी है, वो पानी के साथ बहकर नालों में, नालों से नदियों में, और नदियों के माध्यम से नीचे जो हमारा मैदानी भाग है उसको उपजाऊ करता है। लेकिन वहाँ की जो उपजाऊ मिट्टी है, वो उपजाऊ मिट्टी उससे प्रभावित होती है। तमाम तरह के जो मिनरल हमारी मिट्टी में होते हैं, वो मिनरल्स का वहाँ पर अभाव होता है। वहाँ पर लोग सामान्यतः जो खेती करते हैं वो खेती ऑर्गेनिक खेती होती है, और उससे हमारे जो खेती है उससे प्रभावित होता है, तो हमारा स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। एक उम्दा जो स्वास्थ्यवर्धक जो अनाज है वो उसके उत्पादन में स्वाभाविक रूप से कमी आती है, उससे हमारा जो जनधन है, पशुधन है, वो सब इससे प्रभावित होता है। मैं समझता हूँ कि जो माननीय गृह मंत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव अमेंडमेंट बिल रखा गया है, उससे निश्चित रूप से इन सब चीज़ों में हम लोग मदद कर सकेंगे, और इससे जो हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट जो इनका पड़ता है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कुछ बातों की ओर और आपका ध्यान उत्तराखंड को लेकर आकृष्ट करना चाहूँगा कि जो हमारे नदियाँ हैं वो अधिसंख्य नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, और आज जो हमारे ग्लेशियर हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। 2013 में केदारनाथ से ऊपर जो चोराबाड़ी ताल था, जिसको गांधी ताल सागर भी, क्योंकि गांधी जी की अस्थियां वहाँ पर प्रभावित की गई थी, तो उसको गांधी सरोवर भी कहते हैं, वो टूट गया, और उसके कारण केदारनाथ जैसी आपदा आई जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। और उस समय मौसम इतना खराब था कि वहाँ पर पहुँचना, और तमाम रास्ते ध्वस्त हो गए थे, उसके कारण वहाँ पर पहुँचना भी काफ़ी कठिन था। लेकिन मुझे याद है उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और वो गुजरात से केदारनाथ की आपदा में वहाँ सहायता करने के लिए सहायता का प्रस्ताव लेकर के और उत्तराखंड में आए थे। और उन्होंने क्योंकि सरकार ने उस समय उनको, कांग्रेस की सरकार थी, उनको कहीं पर उतरने की परमिशन नहीं दी, तो उन्होंने पूरा हवाई सर्वेक्षण किया और लगभग 1.5 दिन वो उत्तराखंड में रहे, और उन्होंने उत्तराखंड सरकार को उस समय प्रस्ताव दिया था कि केदारनाथ मंदिर का जो पुनर्निर्माण का काम है, वो जो केदारनाथ जो ध्वस्त हो गया है उसके पुनर्निर्माण का काम
ये गुजरात करेगा। दुर्भाग्य से उस समय तत्कालीन सरकार ने इसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाबा केदार के आशीर्वाद से उनको देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला और उन्होंने केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण किया। वहाँ पर आज बहुत बेहतर सुविधाएं आज जो देश भर से जो श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं उनको दिया। यही नहीं, जो बद्रीनाथ जी हैं, बद्रीनाथ जी में भी पुनर्निर्माण का काम मास्टर प्लान के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी करा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ की आपदा को, वहाँ की पीड़ा को समझा और स्पेशल ट्रेन से गुजरात से सहायता लेकर के और उत्तराखंड में उस समय भेजा था। उत्तराखंड के लोग उसको कभी नहीं भूल सकते हैं। उत्तराखंड के लोग ऐसे आपदा के समय में जब वो देश के प्रधानमंत्री भी नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जिस संवेदनशीलता से उन्होंने उत्तराखंड के लिए काम किया, जितनी तत्परता से उन्होंने उत्तराखंड के लोगों के साथ वो खड़े नजर आए, आज उत्तराखंड के लोग उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कुछ विषयों की ओर और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस पर मैं समझता हूं कि बहुत अधिक गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। वो है जो अवैज्ञानिक तरीके से जो माफिया जो तत्व है वो खनन कर रहे हैं, नदियों को खोदा जा रहा है, उससे हमारे जल स्रोत प्रभावित हो रहे हैं। साथ में लगे हुए जो किसानों के खेत हैं वो उससे प्रभावित होते हैं। उनका पानी का जो तल है वो लगातार नीचे चलता जा रहा है और इसलिए जो इस तरह की आपदाएं हैं उसका भारी नुकसान होता है। मेरा लोकसभा क्षेत्र हरिद्वार है और हरिद्वार में पिछले वर्ष की जो बरसात थी, हाँ धन्यवाद, आप भी हरिद्वार से हैं, तो उन्होंने जब भारी बरसात हुई तो उसके कारण हरिद्वार जनपद की जो शुगर मिल्स हैं, 3 शुगर मिलें वहाँ पर 60% गन्ने की खेती ये पानी में डूब गई और उसके कारण 40% पर ही वहाँ की शुगर मिलों ने काम किया। मैं ये उदाहरण देकर इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि नदियों के कारण और भारी बरसात के कारण, यानी कि जो गंगा जी का उस समय करंट होता है वो बिजली की तरह होता है, इतनी गति उसकी होती है, वो पानी खेतों में चला जाता है। तो गंगा और सोलानी जो नदियां हैं उनसे वहाँ के किसानों की खेती की सुरक्षा के लिए इन तटों को बांधना भी बहुत जरूरी है, ताकि किसानों को जो नुकसान होता है उस नुकसान से बचा जा सके, इस आपदा से किसानों को राहत मिला सके। क्योंकि वहाँ पर मैंने देखा, उस समय में वहाँ का प्रतिनिधि नहीं था, लेकिन मैंने अनुभव किया कि वहाँ पर जनप्रतिनिधियों का जाना बहुत मुश्किल हो गया। लोग गुस्से में थे क्योंकि उनका जो आय का सोर्स है, जो उनकी इनकम का मुख्य सोर्स है, उनके परिवार को चलाने का जो मुख्य आधार है वो खेती, उससे प्रभावित हुई। और इसलिए आपदा प्रबंधन से पूर्व जो आकलन इस तरह के अनुभव जो आते हैं उससे बचाव के लिए इन नदियों का बांधना भी बहुत जरूरी है, उनके तटों को मजबूत तटबंधों के द्वारा, ताकि जो किसानों की खेती है उसको बचाया जा सके। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखंड में तमाम जो भूकंपीय आपदाएं हैं, भूकंप के कारण भी हमने देखा कि 1991 में उत्तरकाशी का भूकंप आया, उसके बाद चमोली में भूकंप आया और लगातार, क्योंकि एमसीटी पर उत्तराखंड है, जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है और जिसकी लंबाई लगभग जितनी हिमालय की लंबाई है लगभग 2500 किलोमीटर है, उस सेंट्रल थ्रस्ट पर ये उत्तराखंड और तमाम हिमालयी राज्य ये रहते हैं, वहाँ पर लोग निवास करते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में वो लोग वहाँ पर उन स्थानों पर अपने घर बना लेते हैं, अपनी दुकानें बना लेते हैं, अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। तो मैं सदन का ध्यान माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं कि एमसीटी पर उसके बारे में लोगों को बताया जाए और उस इलाके में जो मानवीय बसावट है उसके लिए कोई ना कोई या तो ऐसी टेक्नोलॉजी हम उनको दें कि उसी टेक्नोलॉजी से वहाँ पर निर्माण किया जाए, या फिर वहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा खतरा बार बार महसूस होता है उसको
वहां पर प्रतिबंधित किया जाए, जिससे कि जोशीमठ में जैसे पिछले साल हुआ उस तरह की दिक्कतें सामने ना आए, क्योंकि वो पूरा हिमानी क्षेत्र है और मोरेन पर बसा हुआ है और पूरी लैंड स्लाइड कर रही है अलकनंदा की तरफ। तो इस तरह की जो आपदा, इसी तरह से बेल्ट पूरी आपकी जो ऊखीमठ है, वहाँ से उत्तरकाशी का भटवाड़ी जिला है, ऐसे ही अगर 9 किलोमीटर का पैच छोड़ दिया जाए तो ये पूरा उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 2500 किलोमीटर लंबी ये बेल्ट है। इस पर हमको वहाँ के लोगों के बीच में समय समय पर वहाँ की राज्य सरकारें उससे लोगों को जागरूक करें, अवेयर करें, ताकि जो मानव क्षति है, जो हमारी पशुधन की क्षति है, जो खेती की क्षति है, उससे हम लोग न्यून कर सकें। और मुझे लगता है कि इस एक्ट में जो प्रावधान किए गए हैं अवेयरनेस के लिए, निश्चित रूप से लोग जागरूक होंगे। जिस तरह से उसमें आपदा मित्र बनाए जा रहे हैं, उन आपदा मित्रों के माध्यम से, क्योंकि कोई भी आपदा है सबसे पहले वहां पर स्थानीय लोग ये सहायता के लिए पहुंचते हैं स्वाभाविक रूप से। और इसलिए ये जो आपदा मित्र बनाने की जो योजना माननीय गृह मंत्री जी ने तैयार की है, निश्चित रूप से इन आपदा मित्रों के माध्यम से हम तमाम तरह के जो नुकसान होते हैं आपदा के कारण, उसको नियंत्रित करने में, उसको कम करने में हम सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मैं इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री कल्याण बनर्जी जी। Thank you, the Honorable Chairman, sir. Sir, this Disasters Management Amendment Bill 2024, which has been introduced, there are some positive changes in this bill. Director General of Police is now made an ex officio member of the State Executive Committee by insertion of clause 3 of subsection 2 of section 20. Positive change is as member of police force of the state shall now have an active role in laying policy in disasters management and response. Number 2, the bill seeks to create urban disasters management authority for state capitals and municipal corporation area by introducing section 41A in the Principal Act. This is also positive change for the state. State is empowered to create state disasters response force by insertion of section 44A in the Principal Act of 2005 is also a positive change for the state. No changes, that is section 19 of the Principal Act of 2005 is omitted, which speaks about the guideline for minimum standard of relief to persons affected by disasters in the state. As the same power has been given amended under section 18 subsection 2 subsection O of this Act of 2005, hence no effective changes are done. Functions of the State Executive Committee given under clause A, C, I, K and N of subsection 2 of section 22 of the Principal Act 2005 is omitted. As these powers, along with the power of maintaining state disaster database, are now given to the state authority instead of State Executive Committee by introduction of clause 1 to P in subsection 2 of section 18 of the Principal Act of 2005, it is not an effective changes at all. Now some negative changes. An explanation has been inserted in section 2, clause D, to clarify that the expression man-made cause does not include any law and order related matter or situation, or any situation arising from a law and order related matter of situation. What is the probable implication? Payment of reliefs for loss of life or damage to property in any riot-like situation may not be possible. Second, a new clause has been inserted in section 6 subsection 2, whereby the national authority may undertake in the aftermath of severe disasters
in any state post-disaster audit of preparedness and response activities of the state. What is the probable implication? That the possibility of misuse of this clause against the state government cannot be ruled out. In section 56, a new subsection 2 has been inserted by which the state government has been mandated to take disciplinary action on its own or on the direction of the central government against an officer who ceases or refuses to perform or withdraws himself from the duties of his office or grounds of insubordination or dereliction of duty during a disaster. The action taken by the state government shall not be inconsistent with the direction given by the central government. What is the probable implication? This appears to be an attempt to give authority to the central government to control the action of the officers of the state government. This provision encroaches upon the authority of the state government, thereby destroying federal structure of the constitution. Possibility of misuse against the state government cannot be ruled out. Then a new section 41A has been inserted for creation of separate urban disasters management authority for their state capitals and all cities having a municipal corporation. In such UDMA, the municipal commissioner has been made chairperson. Ex officio and the district collector of the district has been made vice chairperson. Now, what is the possible probable implication? In some cases like Bidhannagar Municipal Corporation or Asansol Municipal Corporation, this may create hierarchical anomaly as a collector may be senior to the municipal commissioner. Now I am coming, sir. India stands on this cusp of being the world's third largest economy, and it is already the most populous nation.